क्या करेंगे फर्स्ट? किसी को आइडिया आ रहा है हाउ टू सॉल्व? Anyone, whatever the idea you got in your mind, just share with others. हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं, चलो. $18. First, we have to assume the X age of anyone. Father या रोनित, किसका assume करेंगे तो easy रहेगा, बताओ. मैम रोनी करते. रोनित. Yes. So assume the X age of Ronit. So compare with X. Ronit's age is suppose X. Then what about the father's age? 3x. 3 times. Yes, 3x. Yes, Only ma'am. 3x. More than 3x, x plus 3 something. Yes, it's x plus 3x. It's more than, okay, 3 times more than. So we have to consider 3x, that is 3 times, and more than the x, that we have to add something value. So it is the x plus 3x. So father age is x plus 3x, that is 4x. And Rohit age, present age, it is x. Okay. Now, what is the second sentence? After 8 years, he would be 2.5 times of Ronit's age. So this sentence is talking about the father. Okay. So after 8 years, that means we have to write down 4x plus 8. Yes or no? Yes, miss. Yeah. Yes, ma'am. So 4x plus 8, that is equal to Ronit's age क्या होगा वो टाइम पे? It is 2.5 times. That means क्या मिलेगा? Two and half times. So 2 into 1 by 2, it is 5 by 2. Yes or no? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So we can write them like that. 4x plus 8, it is equal to 5 by 2 Ronit's age. Ronit's का age क्या था? X plus 8. So using this formula, you will get the answer of X. Now tell me what is X. What is X? Eight, ma'am. X is 8. Okay. तो रोनित प्रेजेंट एज आपको मिल गया, इट इज एक्स. अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या पूछ रहा है आपको? आफ्टर फर्दर 8 years, और 8 years के बाद की बात कर रहा है. हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित एज? ओके. तो टोटल 8 and 8, 16 years की बात हुआ. फाइन. तो अभी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एनी आइडिया? Ma'am, 32 again, sir. Answer is not 32, no. मैम क्वेश्चन लिखो ना एक बार. Okay. How many times पूछा है? 32 times नहीं आएगा ना. आंसर will be 5.
से 5 आया, बताओ लास्ट सेंटेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया? After 8 years, he would be 2.5 times. So after 16, it will double of 2.5. No, मैम 4 times है क्या? no. After further 8 years, so we can represent father's age in 4x plus 16. Yes, Correct? Miss. और हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, तो फादर्स एज डिवाइड बाय आपको सन एज करना पड़ेगा, देन वी विल गेट द हाउ मेनी टाइम्स. ओके, so 4x plus 16, or definitely sun ka bhi age after 8 plus 8, that is 16, so it's represented by x plus 16. So we can write down like that, for 4x plus 16 divided by x plus 16. So this is your answer. You know value of x. Understood? Yes, ma'am. जब भी how many times पूछते, that mean you have to divide the ages, whatever the ages are given, whatever the person are given. Okay, और 8 plus age total 16 बोला है. 1.5 times. 1.5? No, it's 2. X is equal to 8 now. Yes, So Miss. 32 plus 16 divided by 8 plus 16. So it's 24. So 48 2 divided times. by 24. So it's 2 times. The answer is 2 times. Done, everyone? Yes, ma'am. Write down the next one. ये तो simple है, आना चाहिए सबको. A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B, C be 27, then how old is B? It's very simple. सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड वाले जब ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ओलंपियाड में, तो आपको तो आना ही चाहिए ये. Miss 10. 10 किसका आंसर? ओके, बी का. या इट्स 10. Okay, Miss. किसने बोला आंसर? अभी आंसर किसने बताया? 10. 18. ओके, 18. या बी इज 10. 63 एक्सप्लेन करो 10 कैसे आया बाकी लोगों को. Miss, I have took the age of C as X, then B is Yes. twice of C, that is 2x, and A is Yes. 2 years older, that is 2x plus 2. And the Yes. total of all these is 27. So equation Yes. solve किया तो x की value 5 और b की ओके, value is 10. गुड गुड. कॉपी नहीं किया ना कहीं से? No, miss. हाँ,
कैमरा ऑन करो ना, मुझे पता चले आप गूगल से फाइंड नहीं कर रहे ना आंसर। बस ऑन रखो कैमरा। बाकी लोग भी प्लीज ईमानदारी से करो, ये आपको बेनिफिट होगा। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। या राइट डाउन द थर्ड वन। सबका हो गया ना सेकंड? बाकी नहीं ना किसी का? ओके। Present ages of Samir and Anand are in the ratio of 5:4, respectively. 3 years hence, the ratio of their ages will become 11:9, respectively. What is the Anand's present age in years? ये भी बहुत सिंपल है। Ma'am, 24 years. Anand. Yeah. Yes, it's 24. No, 27 नहीं आएगा लिखिता। चेक करो। बाकी लोगों को मिला? Yes, miss. रोल नंबर 12, 63, 61, 31 मिला आप लोगों को आंसर? मैम मिला ना, बोला 24. हाँ हाँ हाँ, ओके 12 ने बोला। हाँ बाकी 61, 31। एक्सप्लेन करो 18। रोल नंबर 18 प्लीज एक्सप्लेन अदर्स हाउ यू विल गेट द 24। Yes, miss. Five. Present age is 5:4, and then after 3 years it will become 11:9. So that for we have to find Anand's age. So therefore we will cross multiply and we get the value of that Anand's age. What is the present age of Anand? What? Present age is 4. Is 4. Okay, so you are considering 4x for him Yes, miss. and 5x for Samir, correct?
Yeah. Now after 3 years, so we have to take the 5x plus 3 and 4x plus 3. Its Both will do. ratio is given. Yeah. Ratio So is given. 5x plus 3 divided by 4x plus 3, that is equal to 11 raised to 9. Now Yes. do the cross multiplication. So you will get the answer of x. And Anand's age, present age is 4x. So 4 into answer of x, that is equal to 24. Yeah. Okay. Other students understood? जिसको नहीं मिला उनको समझ में आया? Fine. Now in the next one, don't do in the calcium. Calcium is not allowed the aptitude test. मैम हो गया मैम 6900 हाँ, पर कैल्सी से नहीं करना है वो. नहीं किया मैम कैलकुलेशन हाँ. कैसे किया? नेक्स्ट का कैलकुलेशन. दिख नहीं रहा है यार बार बार दिख रहा है मैम बोलो. नहीं दिखना नहीं, आप बोलो, एक्सप्लेन करो. सिंपल मैम 5 5 625 और मल्टीप्लाई किया 112 ओके. एक्चुअली ये मतलब ये स्मॉल नंबर है, बट नॉर्मली मेथड क्या रहता है कि नियरेस्ट मतलब जो वैल्यूज रहता है राउंड ऑफ 10 20 वो फॉर्म में लाना रहता है. सो इट विल बी इजी टू डू द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ये तो सिंपल छोटा नंबर था तो आप मैन्युअली उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो उसको एक्चुअली कैसे करते हैं? 5 raised to 4 इट इज इक्वल टू 20. ओके. सो वी कैन राइट डाउन इट इज 10/2 raised to 2. मैं बताती हूँ करके. मैंने छोटा नंबर दे दिया आपको बाय मिस्टेक. जस्ट वेट. One two multiply 5 raised to 4. Okay, so I can write down it is 112 as it is. 5 raised to 4, that is 20. So I can write down it is 10/2 raised to 2. Okay. Now, sorry, raised to 4, not 2. Raised to 4. So 112 multiply with the 10 raised to 4 or divide by 2 raised to 4. So ये easy हो जाएगा. 10 raised to 4. That means you have to add 4 0 with 112 only. Okay. Yes, miss. Yeah. So it will be easy. आपको normally अगर ये तो छोटा नंबर था इसीलिए ठीक है. अदरवाइज बड़ा नंबर रहता है so it's difficult to do the multiplication manually. Okay. So try to convert into the tens form and divide by 16. So you will get the answer over here. Okay. So answer is 70,000. Yes, miss. 70,000. Yeah. Fine. Now next. Yeah, write down the next one.